ठीक है. So this was the last sum we had done, ये वाला, as per formula method and as per the same sum with a tabular method, right? Yeah. ये table हमने बनाया था. First, frequency, size of order, ordering cost. C is carrying cost and total cost. Okay, I have taught you the shortcuts also, how to calculate size of order, A upon whatever frequency you're taking. Then how to calculate order cost. I have given you the other formula, frequency into O. Follow that. It will be easy and faster for you to do it. And then for carrying cost, I taught you the shortcut. Okay, उसका numerator denominator fixed रहता है, तो उसको divide करके equal to multiplication sign 2 times, and then you can follow this. Okay, and total cost में so what, you just have to add OC plus CC. तो जो minimum cost है वो decide करने का. So ये total cost के column में से which was the minimum cost, 2000 is the minimum cost. So in that range is my answer. So at EOQ 500 units, my OC is equal to CC 1000, and cost is the minimum. So I'm satisfying all the conditions of EOQ. Okay, और जो भी मेरा formula method में answers था, same answer इधर tabular method में भी होना चाहिए. Okay, clear? Now coming on to this question, today we will do, थोड़ा सा tricky है. From the following information, this is question number 6. From the following information, calculate EOQ. What happened? The highlighter is not working. Okay, it was a pen I selected. Calculate the EOQ, economic order quantity, and number of orders to be placed, that is frequency, in the year according to the formula method and tabular method. We have to do it with both, but in यहाँ पे दो ही चीज पूछा. I told you na, same. Yeah, you have to do all 5 here and all practice like that. तो question paper में जो भी पूछा है वो find कर लेना, but practice इस पांचों चीजों से कर. और वैसे भी table method पूछा है, तो जब तक आप formula method के 5 elements नहीं calculate करोगे, table method incomplete हो जाएगा. तो वैसे भी by default आपको सब 5 calculate करना है. Next. A company manufactures a product from a raw material which is purchased at 80 per kg. ठीक है? So raw material price is how much? 80 rupees per kg. Company incurs the cost of placing an order. So cost of placing an order is how much? 250 plus freight भी है उसके साथ 1150 per order. Okay? Can anybody tell me? फॉर्मूला में से ये कौन सा एलिमेंट है? EOQ में which element is this? Cost of placing an order. What is it? AOC क्या है? Yeah, acknowledge it in the chat box. It's O. Prajakta Shivam. Okay, fine. Absolutely correct. It is my order cost which is represented with capital letter O. Yeah, correct. So ये है O. ठीक है. Next, the incremental carrying cost of inventory of raw material. ठीक है, ये भी दिया है. Fine. Carrying cost of inventory of raw material is 2 rupees per kg per annum. Per kg per annum. Okay, can anybody tell me ये क्या है? Carrying cost of inventory 2 rupees per kg per annum. ये कौन सा element है? Very good, Shivam, Jinam, Prajakta. Yeah, this is my carrying cost C. Absolutely right. Yeah, Jatin, right. C. ठीक है? ये रहा. इधर लिख रही हूँ C. ठीक है? Next. In addition, the cost of working capital finance on investment in inventory of raw material is 5 kg per annum. Per kg per annum. Same. ये भी C है. आपका carrying cost है. ये भी. तो दो carrying cost है.
ऑर्डर कॉस्ट भी 2 है, कैरिंग कॉस्ट भी 2 है, चलेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. The annual production of the product, okay, the annual production of the product is 50,000 units. Annual production, annual production, and 5 units are obtained from 1 kg of raw material. Okay, so ये जो information है, हाँ, अच्छा चलो पहले मैं आप लोग से पूछती हूँ, देखती हूँ कितने जन अपना दिमाग यूज करते हैं. ओके, ये इंफॉर्मेशन कौन सा इंफॉर्मेशन है? एनीवन? ये कौन सा इंफॉर्मेशन है? Annual production of product is 50,000 units and 5 units are obtained from 1 kg of raw material. ये कौन सा इंफॉर्मेशन है? या ये है ए, एनुअल कंजम्पशन. ओके, yeah, Shivam, Devanshi, Jinal, yeah, this is a annual consumption. But अभी तुम सोचो कि मैम ने ये सम क्यों लिया, पहले 2 सम भी तो वैसे ही थे, बट ये सम मैंने इसलिए लिया बिकॉज इसमें ए नहीं दिया है, वरना ए डायरेक्टली दिया रहता है ना. इसमें ए डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया है, ग्रेट, बट डायरेक्टली नहीं दिया है. ओके, तो इधर अपने को ए फाइंड करना है. वी हैव टू कैलकुलेट ए इन द क्वेश्चन. ओके, सो एनुअल प्रोडक्शन जो है, दिस ए इज एक्चुअली, मैं आपको क्या बताया था, ये जो एनुअल प्रोडक्शन है, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन टू यू ऑल, जस्ट आंसर. एनुअल प्रोडक्शन या जो एनुअल कंजम्पशन वर्ड है, या हम लोग इसको एनुअल डिमांड भी बोलते हैं. ओके, ये यूनिट्स, आई मीन दिस इज फिनिश्ड गुड्स का एनुअल प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल का एनुअल प्रोडक्शन? माय क्वेश्चन टू यू इज दैट, आंसर इट इन द chat box. When I say annual production or annual consumption or annual demand, which denotes A, is it finished goods or is it raw material? There is difference between finished goods and raw material. Shivam and Jinal is saying finished goods. Devanshi is saying finished goods. Okay, fine. Okay. शिवम, जीनल एंड देवांशी, आप लोग भूल जाते हो चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? जरा चैप्टर का नाम लिखो चैट बॉक्स पे, क्या है चैप्टर का नाम? मटेरियल कॉस्ट, राइट जीनल? हाँ, तो जब हम मटेरियल कॉस्ट सीख रहे हैं, तो हम जो एनुअल कंजम्पशन कैलकुलेट करेंगे वो फिनिश गुड्स के लिए क्यों करेंगे? हम मटेरियल के लिए करेंगे ना. ओके, या तो ये जो ए है, दिस इज नॉट फिनिश्ड गुड्स, इट इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन. व्हेन आई से एनुअल कंजम्पशन, इट मींस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, द फर्स्ट आइटम ऑफ कॉस्ट शीट अंडर डायरेक्ट कॉस्ट. वही तो हम सीख रहे हैं. हाँ, आप लोग ने ऐसा गड़बड़ आंसर कैसे दे दिया तीनों ने? या ओके, तो क्या हुआ है इन दिस सम? 50,000 यूनिट्स, ये दिस इज फिनिश्ड गुड्स. ये लोग ने उल्टा किया है. इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन यू फिनिश्ड गुड्स का कंजम्पशन. ओके, उससे वी हैव टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल का कंजम्पशन. सो आई हैव टू कन्वर्ट माय फिनिश्ड गुड्स इनटू रॉ मटेरियल इन दिस सम. सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ द सम. ओके, समझ में आया एवरीवन? इज इट क्लियर? दिस क्वेश्चन फिनिश्ड गुड्स दिया है, एनुअल कंजम्पशन. अपने को एनुअल कंजम्पशन फिनिश्ड गुड्स का नहीं चाहिए, मटेरियल का चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग मटेरियल कॉस्टिंग. ओके, सो आई विल हैव टू कन्वर्ट माय फिनिश्ड गुड्स इनटू रॉ मटेरियल फर्स्ट. ओके, और कन्वर्जन दिया है, क्या है कन्वर्जन? व्हाट इज द कन्वर्जन? ये 5 units are obtained from 1 kg of raw material. समझ में आया? ओके, चलो now let us start with the sum. So write down first formula method. Okay, write down the formula. First we are calculating what? EOQ. Okay, what is EOQ? Obviously square root of 2 AOC, 2AO upon C, sorry, yeah.
Square root of 2 into A into O upon C. ठीक है, ये लिखो where A is equal to annual consumption या annual demand. अगर आप कंजम्पशन वर्ड लिखोगे तो आपको स्ट्राइक करेगा, अच्छा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, एनुअल कंजम्पशन. ठीक है, फाइन. अब फाइन करो. ठीक है, सो this is the highlight of the sum. I have picked up the sum because of this. Convert finished goods into raw material consumed. Okay, how am I going to do that? Yeah, units. Units मतलब finished goods दिया है. Sure. And then raw material consumed, तो ये kgs में होगा obviously. ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में? 5 यूनिट बनाने के लिए 1 किलो रॉ मटेरियल लगता है. ओके, 5 यूनिट्स फिनिश गुड्स का बनाने के लिए 1 किलो रॉ मटेरियल लगता है. तो मैंने कितना यूनिट्स बनाया है? 50,000 फिनिश गुड्स मैंने बनाया है. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, we get the answer. ठीक है, so that is cross multiply. Search on for the calci. So 50,000 into 1 divided by 5. 10,000. Why इतना? फिर भी कर लेते हैं. 10,000 kgs of raw material. Cross multiply, अपने को आंसर भी आ गया 10,000 kgs. ठीक है, ये है A एनुअल डिमांड. सो इधर लिखो is equal to 10,000 kgs. Okay, yeah, very good, Jinal. You have calculated. समझ में आया? Everyone understood the twist in the sum? Just acknowledge in the chat box. सबको ट्विस्ट समझ में आया क्वेश्चन का? हाँ, क्वेश्चन कितना इजी दिख रहा था ना? हाँ, एकदम हलवा जैसा. बट देखा ट्विस्ट? Many students will do the mistake of taking A as 50,000, which is wrong. नेक्स्ट A मिल गया, अभी क्या चाहिए? O. ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर. दो ऑर्डर कॉस्ट थे ना क्वेश्चन में? यस, 250 एंड 1150. रुपीज 250 एंड रुपीज 1150. ऐड करो 1150 प्लस 250, कितना हुआ? 1400. सो माय O is 1400. Okay, next I have to calculate carrying cost. So carrying cost per unit per annum. Okay, percentage देखना पड़ेगा कितना दिया है. Okay, there's no percentage in the sum. Very good. सीधा add कर लो. 5 rupees and 2 rupees. दो carrying cost है ना? 5 rupees and 2 rupees. तो मिला के कितना हुआ? 7 रुपया. So 5 rupees and 2 rupees. So it comes to 7 rupees per unit per annum. Okay, yeah. Now substitute. Substitute in the formula. इधर substitute करो.
Okay, right now. 2 into A is 10,000, into O is 1400, into C is how much? 7. Okay, directly solve it and make the answer. 2 into 10,000 divided by 7. So 40 lakhs. Press the square root sign. So my answer is 2000. So 2000 kgs is my EOQ. Sorry, box करना है. This is my answer. Okay, got my EOQ. So एक बार में मैन्युफैक्चरर कितना ऑर्डर प्लेस करेगा? 2000 किलो का ऑर्डर एक बार में प्लेस करेगा. इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं. तो ये उसका EOQ है. जो कितनी बार प्लेस करेगा, नेक्स्ट वो निकालना है, फ्रीक्वेंसी. ठीक है. So next come to frequency. Second one, frequency, also known as number of orders to be placed. Okay. So what is the formula? A upon EOQ. ठीक है. So A कितना है? 10,000. EOQ कितना है? अभी मिला 2,000. Okay. Write down the final answer. 10,000 divided by 2,000. 5 times in a year. So my answer is 5 times in a year. Okay, box it. 5 times in a year. ठीक है. अब verify करो. Verify your answer whether what you have done is right. So 5 times multiplied with EOQ 2000. See, I should get my A back. A annual consumption 10,000. It should tally. Okay. Next, calculate what? OC and then CC and then total cost. Okay. Next, I mean the third part, order cost. Okay, what is the formula? A upon EOQ into O. Okay, और इसका एक सब्स्टिट्यूट भी मैंने बताया था. आप क्या यूज कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विथ O. ये इजी पड़ेगा एक्चुअली, है ना. टेबल मेथड में भी यूज द शॉर्टकट. So let us see. 10,000 divided by 10,000 divided by 2,000. Okay, 3,000 into 1,400. So 5 into 1,400, I can do it directly. So my answer is 7,000. So 7,000 rupees is the answer. Check here also. My answer is frequency 5 times into 1,400 rupees. I'll get the same answer, obviously. 5 into 1,400 is 7,000. This is how you will verify whatever you are doing is correct. Always box the final answer because in this chapter you have many multiple answers, so it becomes easy for the examiner to check this skill. So you have to box the final answer. I never do it for other chapters because there is a statement. Here there is no statement. Here there are formulas. You have to apply, calculate. So the final answer has to be highlighted. Okay. Next, fourth one.
I'm going to calculate CC, carrying cost. And how will you verify carrying cost? The answer has to be equal to OC, yeah, order cost. So what is the formula? EOQ upon 2 into C. Okay. So how much is my EOQ? My EOQ is 2000 divided by 2 into, this is 7 rupees. Obviously it is same. 7000 is my answer. My answer is correct. OC is equal to CC. Okay. Sure. Thank you, Devanshi. Yeah, thanks, dear. So, check. Up next क्या fifth one total cost. I'll find it here. बाजू में ही कर लेती हूँ total cost. Fifth one total cost. Total cost का भी I have taught you shortcuts. Yes. Square root of 2AOC. 2 into A into O into C. Okay, so 2 into 10,000 into 1400 into 7. Solve it. 2 into 10,000 into 1400 into 7. So, nothing. 19 crores 60 lakhs. Okay. The square root nikalo 14,000. Okay. So, 14,000. Box it. It's the alternative formula. Yeah. Total cost is equal to order cost plus carrying cost, which we use in table method. So 7,000 plus 7,000. I got my answer. 14,000. Clear everyone? समझ में आया? Okay. Is the the formula method clear to everyone? Okay. Is the formula method clear? Then I'll move on to the table. Okay, I'll just give you a glimpse about the table, how to do the table today, and then you may practice it. Okay, fine. Thank you, dear. So let us start making the table. First column is frequency. Second column is size of the order. Third column is ordering cost. Fourth column is carrying cost.
Write your table method or tabular method. Okay. First is frequency, that is number of orders. Second is size of order. Okay, same thing we will use. Yeah, A divided by frequency. Anybody writes A upon number of orders placed, एक ही बात है, कोई अलग नहीं है वो. Order cost A upon size of order into O. Okay. और इसका शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया है, व्हाट टू यूज. या दिस वन, फ्रीक्वेंसी इनटू. Yeah, don't give your attendance in chat box. It's okay. Screenshot is taken. Don't waste time, dear. वैसे भी we have last 5 minutes, 4 minutes, sorry. So don't waste time. Okay. Already taken screenshot. Next, CC, carrying cost, size of order upon 2 into C. Okay. इसका alternative shortcut also I have told you which one to use. Yep. C upon 2. Yeah, ये constant रहेगा. ठीक है ना. C कितना है 7. 7 upon 2. ठीक है. Equal to sign, multiplication sign 2 times. So we use the shortcut. And last, total cost. Order cost plus carrying cost. Okay. Obviously, I'm just giving you a glimpse of the sum. I will not be doing this table part. You will do it. इस सम आप कंप्लीट करोगे. मैं आपको सिर्फ एक आइडिया बता रही हूँ कैसे बनाना है टेबल. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरीफाई करेंगे. एनीवेज आपको वेरिफिकेशन भी पता है, हाउ टू वेरीफाई. हाउ मच इज माय फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स. तो मेरा गैप क्या होगा 1 2 3 4 5. सिंपल. ठीक है ना. सिंपल गैप रखो फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में. 1 2 3 4 5. I know my answer is here. है ना. 5 is my answer actually, but I should go 2-3 steps more. That's it. ज़्यादा मत. 2 step या 3 steps आगे. Okay. I know my answer is here 5. ठीक है. Now come to size of order. है ना. A कैसे निकालोगे. 10,000 divided by 1 is how much. 10,000. 10,000 divided by 2 5,000. 10,000 divided by 3 ऐसे करते जाओ. recurring रखो. 3,333.33. Next, 10,000 divided by 4 2,500. 10,000 divided by 5 2,000. 10,000 divided by 6 16667. 1666.66 recurring. 10,000 divided by 7 1428. Okay. 1428.5714. डेसिमल्स में है तो वो अपने 4 डेसिमल्स फॉर एक्यूरेसी याद रखना है सर. ठीक है.
First two columns I have done it for you all. बाकी की 3 columns, how we have done it earlier, do it and complete this table. The more you practice, the better for you. मुझे तो ये आता है, correct? आपका practice is more important. Okay, and please do it with the shortcut method so that you learn to save time during exams. And that comes only with practice. जब तक practice नहीं करोगे ये सब shortcut जो मैं बता रही हूँ कोई काम का नहीं है. तो practice से ही आपके दिमाग में बैठेगा. Unless until you don't practice, it will not be tuned with your brain. You have to tune it.